passing percentage from Astral Education has been 95.4%. Okay, so any person who has taken coaching from this institute, 95.4% is the chance of getting across on the very first attempt. Okay, besides that, because of his hard work, sincere efforts, he has been nominated for many accolades, many awards. Okay, I mean the list is very, very endless. He has been the winner of Entrepreneur India 2017 award. This was awarded by Tecnia. Yeah. This was by Entrepreneur Magazine, US based magazine. Okay, Entrepreneur Magazine, that's a US based magazine. Then, online tutoring has been awarded. Awarded as Top Leading Coaching Institute for UGC NET and JRF in North India at International Education Award by Silicon India, and the one which is going to come in the month of June would be given by Anna Hazare himself. So that is the effort, that is the way this organization works. Just to share my secret with you guys, he is my ex-student from MIT Business School, one of my proud students of MBA department. He is well versed in the business analytics, which you know, but which the world doesn't know, is competitive intelligence. Many of our students from MIT University, they have started off their own businesses and are doing extremely well. Why? Because of that particular course. Because that course really taught them how to do complete analysis as to what your competition is doing. Because in any industry that you move, without analyzing your competitors' moves, you really can't move ahead. So what they are thinking, what are their future plans, 5 years, 7 years, you analyze, you do complete analysis, the market trends, their past records, the share market, so many things that move into, and then you stay ahead in the competition. In the competition, I would say the rat race. Okay, but as far as Rakesh is concerned, not because that he's been my student, because I have been in close liaison with him, I have seen him working, I had good relations with him, I still have, and my blessings for him, they travel deep in space and time, always. So we've been in touch since 2006, and he had actually started his venture way back before, even before he could do his MBA from the MIT University. And by the time, I mean, he could get his degree in his hands, he already had 6 orders in his pocket. Yeah, so that's the way he has gone, and he never looks back, keeps on innovating things, and because every week we normally talk to each other, we share ideas as to how to do better and better. He doesn't get stopped. He doesn't stop at one particular thing. कि अब जो बोलना सा हो गया, जितना भी तो कमाना था कमा दिया. No, that is not the end, and that is not the only criteria for him. Okay, for the society, maybe I don't know. They being philanthropists, they are the corporate social responsibility that we normally talk about. I don't know. I mean, how far he has gone into that. बट आज तक मैंने कोई ऐसा कोई इंसान कोई ऐसा वो नहीं देखा जो इनकी शरण में गया वो कभी उदास होकर वापस लौटा हो. I mean, he has a very, very big heart. Okay, and he is going to be the final judge. So we have a person to whom you are going to show cause your talents, who is going to scrutinize the way a business should be run. Okay. So whatever you're going to show, because I wasn't there available in your first round, I was busy in other activities and had to receive him also. Then there was a small meeting with the director, then a small chai, and then I have been running up and down. Okay, so he is going to be the final judge, and with him I was a part of the company because I have 20 years of working experience before I moved into the education industry. So थोड़ी बहुत knowledge मुझे भी है.
बट बिजनेस को कैसे एक्चुअली रन करते हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज, क्या क्या लीगैलिटीज, क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या रिस्क उठाने पड़ते हैं, वो राकेश जी ज़्यादा इसको बेहतर से समझ पाएंगे. बिकॉज in my young days I never thought of running a business. अब इतनी उम्र हो गई, I really can't run a business now. There is no age for being an entrepreneur. Many lessons that I have to learn from you. Okay, so we'll begin. We'll announce the teams who have qualified in the second round. But I would expect not everybody to leave the, even though you may not have qualified, but yes, you still have to collect your certificates. Okay, so and we plan to distribute the certificates today only. Okay, तो अब आए हैं, पूरा दिन लगाया है, Saturdays on almost we are touching 4 o'clock. So everybody is expected to sit back and by the end of the program, you collect the certificates and we'll run the program now. Friends, today I, Akash Gupta, my business partner Himanshu Bansal and Kushi Bansal are standing in front of you all to discuss our business plan. Can anyone tell me what they think a suitcase can have? What is clothes? I hope a pair of shoes, a personal belongings. Is there anyone in the audience think that a kitchen in a suitcase? This is what our product is all about. We are planning to make a kitchen inside a suitcase. So we named it Galley. Galley in English dictionary means kitchens in trains, planes, ships, etc. Which means a place from where we get food, we get meal while traveling. So after purchasing this, you will be getting meal in your traveling places by this product. This is why this product is very efficient for the customers they have. So I will firstly start with the business idea, from where this business idea came in my mind. In the time of May, I have just given my board exams and we went to Shimla for vacations with my parents. And there, in between the mountains, my car break down and it was stuck for 6 to 7 hours. So at that time, we were so hungry that me and my sister were talking that why don't these trees give apples and mangoes? We were that much hungry. So that time, our imagination level was at peak. So we both were standing outside the car and watching the car sailing. There we saw a suitcase and she just cracked a joke that can we have a kitchen in this suitcase? And there the idea flashed in my mind, and from that time till yet we were developing this product for our customers. So first of all I will start with product description. I have told you the name of my product. So the weight of my product will be 9 kgs plus 10 kgs for space for the raw materials for cooking purpose. So the total weight of this product will be 90 kgs maximum. And the dimensions are 45 cm into 30 cm into 65 cm. For initial basis, it is available in black color, but after some time, by taking customer feedback, we will customize our colors also. Now I have shown you the outer view of this product. The inner view of this product will be explained by my business partner Himanshu. The heating element works on the basis when we place our galley on the heated object. It converts the heat into the electricity, and the induction cooktop starts. The process of converting this heat into electricity is known as thermoelectric generator, which converts the heat into electricity. We have provided a battery with a backup of 5 to 6 hours. The solar panel works with the heat of sun, and there are various segments such as this segment is provided for forks, spoons and knives. This is the cutlery section, and here you can put salt, tea, sugar or spices. Here you can place your chakla and melon, and here it is a chimta stand here over there, and this is a space for extra raw material you want to carry with you. The holes with a bottle stand of oil or cooking oil, etc., vegetable oil or olive oil.
and this is the space provided for the left out food. That is, when you make the food and you can't consume it at time, then you can place it here and consume it later. The business model canvas of our product is the key partners are me, my friend Akash, and Khushi. Key activities of our product is it's used for cooking food. Value proposition of our product is it provides a sense of homemade food with hygienic to our precious customers. Key resources are the elements used in assembling our galley and the resources key raw materials used for cooking the food. Customer relation. We provide after sales service. The channel we provide channel of distribution of our galley is one distribution of channel that is via agent. Our customer segment is basically bachelors, travelers, religious tour agencies or person having job mobility. जिस पर्सन की जॉब मोबिलिटी है ना उसके लिए तो ये एक ड्रीम कम ट्रू है. उसको गैस नहीं लगानी, सिलेंडर नहीं उठाना, कोई रिस्क नहीं है लीकेज का. उसको जस्ट बैकअप करना है और चलो भाई अपने लगाओ और बनाओ और खाओ. कॉस्ट स्ट्रक्चर जो हमारी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 48,000 एंड सेलिंग प्राइस है 50,000. The profit of 2,000 per product includes the contribution of 1 rupee to the social welfare fund. Our 2,000 rupees profit is minimum because we are at initial stage. There is a very well-known pricing policy that is penetration, price penetration. In this policy, initial stages, we try to grab the market and stand in the market well, and afterwards we can raise our profit margins. Our revenue streams is by selling our product that we can earn the revenue. Now my friend Khushi Bansal will carry forward. Marketing mix. Marketing mix includes 4 P's: product, place, price, promotion. First P is our product. The logo of our product is this. The suitcase indicates the portability of our product, and gallery represents our kitchen. The tagline of our product is a dream kitchen. Dream kitchen is the reason behind this tagline is, as my business partner Akash showed you the story behind this. It's the dream of him. In our product line, there is only one product still. With the success of the product, we will work on this and may add more products in our product line. The next P is place mix. The channel of distribution we are using is indirect, having one intermediary as agent. Through agents, we are going to contact our customers. The focus centers are Patna, Allahabad, Kota, Kanpur, religious places. The reason behind these centers is these are the major cities where the centers for the entrance exams like IITs and PMTs held. So the students going for the entrance exams can use this product for having the feel of homemade food. Our target market is religious tour agencies, bachelors, PG students, persons having job mobility, and the travelers. Persons who travel on the regular basis can have the advantage of our product. So when they travel, like at hill stations, mainly the food we can found is the night. So then at the next P is price mix. The price of our product is 50,000 approx. Our manufacturing cost is 48,000. Profit is negligible as it is a startup. So our profit margin is very less. But 1 rupees per product will be contributed as a social welfare, as it is the duty of every business to contribute to the social society. The further will be explained by my friend Himanshu. We have opted 4 types of promotion mix, that is standouts, campaign, institutional visits, and flyers. Flyers, that is the posters behind the newspapers and autos, color. This is our idea. You need to share it. Akash, right? Akash, my question to you would be the dimensions. Can you go on that slide, the initial slide where you have mentioned the dimensions? जी, जो आपने बिल्कुल स्टार्ट बिल्कुल
आपने जो डायमेंशन दिए हैं वो है 45 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर. And my observation says, if I convert it into inches, that comes to 17 inch by 11 inch by 25 inch. और आपको जान के हैरानी होगी, इसका 90% सिर्फ एक इंडक्शन चूल्हा है. जो स्टैंडर्ड एक इंडक्शन चूल्हा मार्केट में आता है, जिसके ऊपर आप सिर्फ एक बर्तन रख सकते हो, वो इसका 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. तो बाकी 10% में आप रॉ मटेरियल 10 केजी का कैसे फिट करने वाले हैं? Basically, you are working on the base site is just a platform, but we are making it जो इंडक्शन कुकर आता है उसके नीचे एक सोलर पैनल लगा होता है, उसके नीचे और भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं बाहर से कनेक्टेड. बट वी आर प्लानिंग अ बेस. बेस इज समथिंग दैट विल बी हीटेड एंड इट विल मेक इट इंडक्शन ऑटोमेटिकली. फॉर that induction cooker, for the cooker that is available in the market is having a conductor in it that heats it up. But we are making it with a solar thermo. प्लेट के नीचे कुछ तो दोगे गर्म करने के लिए. बेस जो आपका है जिसके ऊपर आप बर्तन रखने वाले हो, उस बेस के नीचे कोई तो हीटर दोगे जिससे वो बेस गर्म होगा. सर एक थर्मोजेनेटिक का जनरेटर है, उससे हम उसको बेस को बनाएंगे जो ऑटोमेटिकली हीट को अब्सॉर्ब कर लेगा और वो इंडक्शन को वर्क करेगा. मतलब इट इज बेसिकली अ टू लेयर प्रोसेस, बट द inductions you are talking of, it is a bigger process. So you are coming up with a new kind of induction as well. Yes. Into this. ठीक. My question to Himanshu. हिमांशु, एक चीज मुझे समझ में नहीं आई. आपने कॉस्टिंग बताई थी कुछ इसकी 48,000 है ना, और 50,000 हमारा सेलिंग प्राइस, 2,000 का प्रॉफिट. नेगोशिएशंस के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन वाले उनके लिए हमने कुछ नहीं छोड़ा. नेगोशिएशन, परसेंटेजेस, डिस्काउंट्स, बार्गेनिंग, कस्टमर का अधिकार. अभी हमारी सर इनिशियल स्टेज है, तो हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल लो कॉस्ट पे. और इंडिया में ये नया कॉन्सेप्ट है, इससे पहले इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट आया भी नहीं है कि एक सूटकेस में किचन. तो जो बंदा मतलब एजुकेशन पे 2.5 लाख रुपए लगा रहा है अपने बच्चे की, वो इसको अफोर्ड कर सकता है कि हाँ भाई 50,000 में मेरा बच्चा. वो 2.5 लाख लोन से लिया होता है. सर वो तो डिपेंड करता है कंडीशन उसकी. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपसे. 48,000 का ब्रेकअप समझना चाह रहा हूं मैं. ये 48,000 कैसे आया है अमाउंट? सर ये इसको आपने किसके सेट्स में काउंट करा है, किस चीज पे कितना खर्चा आ रहा है, बस वो समझा दो मुझे. सर ये 48,000 में से 10,000 तो हमारी जो सूटकेस है. अच्छा, ठीक है. और जो 2,000 है वो उसके कंपोनेंट्स डिवाइड करने हैं. जो क्या कहते हैं सोलर पैनल की कॉस्टिंग है वो 20,000 है, और जो हीटिंग एलिमेंट है वो रिमेनिंग पार्ट है. ये होल कॉस्ट हमारी उसको वो जो वर्कर्स है उनको जोड़ के आपने संभाल लिया है. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं लगेगी सर, वो इंक्लूड है सर. अच्छा, वो मिसलीनियस है सब कुछ. For all the places that you mentioned, the institutional hubs where you go to market this product, religious places में मेरे को इसका वो समझ नहीं आया. Sir, basically the people who go for religious places, they avoid onions, garlics, and they are old age type of people. भाई का महीने में एक बार और वो कैसे बोल रहे यार. Sir, I am just talking to हां ठीक है, you are talking about the masses. yes. तो सर जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनको बाहर का खाना से अच्छा अपने घर का खाना लगता है. वो प्रेफर करते हैं. और वो ना सिर्फ ऐसे लोग होते हैं जो महीने में 2 बार 3 बार, सर करे 1 बार जाते हैं, वो महीने में 5 6 बार बाहर जाते हैं. तो उनको बड़ी दिक्कत होती है बाहर. सर उनको बड़ी दिक्कत होती है कि बाहर बार जाके अलग अलग जगह पे अपना खाना अवेलेबल करने के लिए, और वो सर बड़े हैबिचुअल होते हैं घर का खाना खाने के लिए. एंड दे आर मोर इंटरेस्टेड टू हैव होममेड फूड्स देन द फूड दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट. ये तो रीजन हो गया आपके रिलीजियस का. यस. बाकी जो शेयर सर दूसरा रीजन रिलीजियस का ये है कि उनका जो बॉडी मतलब डाइजेशन प्रोसेस है वो भी उनको अलाउ नहीं करता कि बाहर का खाने. बटर नान और दाल मखनी खाने के बजाय वो सिंपल दाल और रोटी प्रेफर करेंगे उसके लिए. ये बाकी की जो है पटना इलाहाबाद उसका रीजन ये है सर, जो बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए बेसिकली ये हब है. आप इसमें दिल्ली सर अभी हम स्पेशलाइज्ड फोकस कर रहे हैं, मतलब स्पेसिफिक
इनिशियल है हमारा स्टार्टअप, तो धीरे धीरे हम सब कर रहे हैं कैप्चर. Good afternoon to all the judges present here and my dear friends. So I am Vikas Mahara. I am Arvaz Khan. I am Mol Parashar. And we all three are the founders of Vikas and Cars. So guys, hello. First of all, any one of you have heard the name Vikas and Cars? No, none of you. So you guys will. Okay. So for now, what is Vikas and Cars? Vikas and Cars is an online automobile portal which provides latest automobile news, car and bike reviews, and all the amazing stuff related to automobile. For now, Vikas and Cars lives its existence as a Facebook page. So as you can see here, it's me sitting behind the Audi R8 V10 Plus. Okay. So as a Facebook page, and an Instagram account, and a Twitter profile. Okay. So why Vikas and Cars? Why just cars? The only thing which used to fascinate me the most since my childhood is cars, bikes, speed, thrill, and all this stuff. So I thought, why not convert this passion of mine into a successful profession? Okay, so even I was a YouTube fanatic. I used to watch YouTube a lot. So and even I joined the field BJMC. It made me more aware about the social media handles and all that. So choosing BJMC made me sure and made me go through this plan of making Vikas and Cars a successful business. Okay, so now I'll take you through the journey of Vikas and Cars, in which we'll explain you about the different steps, in which we'll be including all the social media handles. So first of all, let's go with Facebook. So, what part is Facebook playing in my business or my profession? Okay, Facebook is one of the most important platforms for Vikas and Cars. It is actually the base of Vikas and Cars, which will help us in connecting with the audiences, connecting with different car brands, and connecting with different sponsors. It is also one of the major sources of income. So how? How this income can be earned from Facebook? First of all, the only thing that we are going to focus is focusing on our target audience. Okay, this every one of you might be aware, but many of us don't look into it that much. The most important thing in Vikas and Cars making a successful and popular online portal, we need to focus on our target audience. In our case, the target audience is basically the male audience because they are much more car fanatic than the female audience. That's what we have observed. Okay, so in my case, I include basically the youngster, the teenagers who watch YouTube a lot, who use the social media handles a lot, and the middle class and even the old age men. Okay, so next we are going to talk about driving traffic to our website. So, what is driving traffic to our website? It basically means driving traffic to our sorry for the mic. It basically means driving traffic to our website and social media handles. Okay, traffic here means the audience. So how we are going to track that audience? We're going to track that audience by sharing the links of our posts, articles of Facebook, on our website, on our Instagram, and even our other social media handles such as Twitter. Okay, so the next point that we're going to explain you now is social media influencers. What is an influencer? An influencer is an individual who has an above average impact on social media. Which connect brands with social media influencers. One such platform and one of my favorite is Facebook. Okay, so basically what is an influencer? Influencer होता है यार मतलब जिसका सोशल मीडिया के ऊपर एक कॉमन बंदे से थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है? तो वो जो इन्फ्लुएंसर है फॉर एग्जांपल फेसबुक वो मुझे स्पॉन्सर्स के साथ कनेक्ट करेगा, ब्रांड के साथ कनेक्ट करेगा. फॉर एग्जांपल आई कैन कनेक्ट विद ऑडी, पोर्शा, लैम्बोर्गिनीज, Maserati and all that. The thing which will help me in it is Facebook. Okay, so next is, can you please switch to next slide? Giving shoutouts to smaller pages. This is actually a very common thing, but most of us aren't aware of this. You know there is a term paid promotion in Facebook and other social media platforms such as Instagram. Okay, we pay money to YouTube for getting higher number of likes, getting higher number of reach on a post on a Facebook account. So if my page grows very good, I am having around 150k followers on my page. For example, sir contacts me कि भाई तेरा पेज बहुत अच्छा है तो क्या बेटा आपका पेज बहुत अच्छा है. हेलो, क्या आपका पेज बहुत अच्छा है? मैं फेसबुक कि बेटा आपका फेसबुक पेज बहुत अच्छा है, ठीक है? तो मैं फेसबुक को पैसे देने से अच्छा मैं आप फेसबुक मेरे से 10,000 मांग रहा है, मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा था उसमें,
मैं तेरे को दे देता हूँ 9,000 या 8,000 और तू वो अपने पेज पे मेरा पोस्ट डाल दे, फायदा क्या होगा? मेरा पेज ऑलरेडी अच्छा ग्रो है, सर का पोस्ट की रीच अच्छी रहेगी मेरे पेज पे डाल के, ऑब्वियसली. ओके, so you got my point now. So our next important social media platform is Instagram. Instagram is one of the most important sources in promoting our Facebook page. The story feature of Instagram will be used for updating people with all the latest automobile news. Okay, and moreover, Instagram is also another important source of income for a business. Many of you might be unaware about how to earn income on Instagram. Okay, that I'm gonna tell you with an image. Okay, in this image, suppose I am standing here. I can get income from the car standing behind me, from my shoes, from my boots, from my jacket, from my shirt, from the bags I'm using in my hairstyle. Once I get good number of followers, I can earn money from anything. Okay, how? You have listened about Beardo, Daniel Levine. These guys are promoting their brands just by these guys are promoting their brands by socializing them on सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम. अभी मेरे बालों में अगर बियर्डो की वैक्स लगी है, मैंने लिवाइस के जूते पहन रखे हैं, मैंने लिवाइस की शर्ट पहन रखी है, किसका प्रमोशन हो रहा है मेरे साथ साथ? लिवाइस का. मैं उससे पैसे अर्न कर सकता हूँ. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट इंस्टाग्राम. ओके, नाउ माय फ्रेंड विल एक्सप्लेन यू अबाउट द प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर एंड यूट्यूब. जैसे कि हमारे बाकी सोशल मीडियाज है, जैसे फेसबुक हो गया और अभी इंस्टाग्राम. अब आपने नोट किया होगा इन सब सोशल मीडियाज में जो हैशटैग वाली चीज होती है ना, वो सबसे ज्यादा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी फेमस जाती है. तो हमारा मोटिव ये है हैशटैग विकास एंड कार्स को भी बहुत प्रमोट करना है, जिससे कि हमारा नाम और ज्यादा बनता जाएगा. फिर अब यहाँ इतने सारे सोशल मीडियाज पर हमारे को स्पॉन्सर आ रहे हैं, हमारे को पैसा मिल रहा है. अब हमारे पास टाइम है कि हम उसको इन्वेस्ट करेंगे. इन्वेस्ट किस में करेंगे? कैमराज में. उसके लिए इक्विपमेंट्स लेंगे, जिससे कि हम एक अपना यूट्यूब चैनल खोल सकें. हम सबको पता है यूट्यूब कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है और कितने सारे और जनों को खड़ा किया है अपने दम पर, और हम अगर मेहनत करें तो हमारे भी बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं. अब हमारे यूट्यूब चैनल में क्या होगा? कार रिव्यूज, बाइक रिव्यूज, जो कि बिल्कुल अनबायस्ड होंगे. और एक जैसे एक कोई रैंडम बंदा है, वो सोच रहे हैं यार नई गाड़ी आई है तो मैं किन बेसिस पर खरीदूं या खरीदनी चाहिए मुझे या नहीं, तो हम लोग उसे हर पर्सपेक्टिव के तौर पर उसको रिव्यू देंगे कि माइलेज कैसी, परफॉर्मेंस, पावर कैसा है सब. अब हमारे पास आती है स्पॉन्सर वीडियोस. अब हमारे चैनल में क्या होगा, जैसे सपोज ऑडी आती है, ऑडी में कहा कि यार हमारा एक नई कार आई है, तुम लोग इसको प्रमोट करोगे, है तो हम कुछ डिफरेंट करेंगे. हम लोग क्या करेंगे, हम गाड़ी को लेके जाएंगे पब्लिक के अंदर, उनके रिएक्शंस रिकॉर्ड करेंगे और प्रैंक्स करेंगे, डिफरेंट चीज. और जो हमारी वीडियोस होंगी नॉर्मल ऐसे नहीं होंगी, बंदा आया है बड़ टेक्निकल स्टफ बोलता जा रहा है, आधा सर के ऊपर से जा रहा है, तो थोड़ा उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी डालेंगे. और जो हमारी यंगर ऑडियंस है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम यूट्यूब पर एंगेज रहती है, उनके लिए हम लोग सिनेमैटिक्स कैमरा ट्रिक्स यूज करेंगे, जो कि a bit एक्साइटिंग कर देगी वीडियो को, जस्ट लाइक एरियल शॉट्स और पैरालैक्स इफेक्ट फॉर शोइंग द कार शॉट्स. सुपर कार ब्लॉग्स, हम इसमें ब्लॉगिंग का भी कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे. लोगों को इंटरेस्ट होता है कि चलो हाँ यार मैं इस बंदे को फॉलो तो कर रहा हूँ, बट यार ये इसका खुद का रिएक्शन क्या होता है जब ये इतनी सुपर कार्स के साथ में बैठता है, ड्राइव करता है और, तो हम वो चीज भी इसके अंदर मिक्स करेंगे. Guys, I want to mention that whenever I see a supercar, you will be seeing the supercar later. You will see my reaction first. I'm like totally mad when I see a supercar in front of me. Now I'm gonna talk about website. Website will help in driving traffic to other social media platforms. Traffic means the audience that I have. I can transform them from one platform to another. And adding a good website with a Facebook page will automatically increase the reach of our page. That's a fact. That if I have a good website, then the reach of my Facebook page will be high. Website will act like a major source of earning income with the help of different tools such as bounce rate, CPI, RPM. Bounce rate means the time of duration when I'm watching a website. The average time is 7 to 8 seconds. It has a relationship with the ranking of website. Like if the bounce rate is low, that ranking of website will be high. And CPI is cost per impression. Future perspectives, like we are planning if we go to the good level, then Vikas and Cars will launch its own automobile magazine. Unlike other magazines, our magazine will include automobile stuff, which will attract a large number of audience, teenagers who are getting uninterested in reading the books day by day.
but we are going to do this because we want to show them some different things. We will attract them, and the magazine will be issued every month. The magazine will include top 3 articles and car or bike sketches from common people. This will make us interactive with our audience, and this is also going to give exposure to the young motor journalist who wants to be like my friend because. So, at last, when I've achieved a lot, I've got a big Facebook page and a big Instagram account, everything is good. Then what I'm gonna do? I try my best to open India's first car club for common people. Many of you have heard about Cannonball. All the car clubs are for the ultra rich or the rich people. But मैं ड्रीम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे जो और बच्चे भी ड्रीम करते हैं सुपर कार्स का, उनकी एक ड्रीम बस ड्रीम बनी नहीं रह जाए. उन लोगों को भी इंटरेक्ट करने को मिले इतनी बड़ी सुपर कार्स का, उनके नॉलेज मिले. So I try my best to open the India's first car club for common people. Okay, so that's all about our plan. And at last, I want to tell you about something. My Facebook page. I opened the Facebook page around 2.5 months ago, and I have got around 531 likes, which many of you might be thinking कुछ ज़्यादा नहीं है. But the market for supercars in India is very compact in comparison to that of lifestyle, cooking, Bollywood, main sarcasm cases, etc. So whatever I achieved and whatever targets, I'm planning around 200k likes on my Facebook page by the end of 2000. All these results are by the end of 2019. 70k followers on Instagram and around 150k subscribers on YouTube. That's what we are targeting by the end of year 2019. Thanks a lot. Thank you so much. Victimize. Okay, you are Vikas, right? Yes, sir. May I know your names, please? Anmol. Anmol and Advance. Advance. Advance, what is your share in Vikas and cars? Yeah. Percentage share? Right now we didn't discuss about that because we are working like a team. Okay. And whatever will be the share or investment, we will do it like by sharing these things. Okay, question for Anmol and Advance. Vikas and cars में आपका क्या है? सर एक्चुअली में मेरा इंटरेस्ट वीडियोग्राफी में बहुत है, तो ये जो You will be a video photographer, videographer and photographer. yes, like So you will be working for him. No, he won't be working for me. with him. You will be working for him. With him. For For him. all his YouTube activities or any other stuff he says to me. In the whole presentation, I'm sorry if you three are the partners. I couldn't see you two guys there on the presentation. I could see only Vikas. Because it was his vision, Yes, that's why we want to take him forward. Okay. But So he would be the face of the organization and you would be As the a friend, support we will plus. support him. No, sir, whenever the website will become, if the founders will come, I am promising this, that all three of us will come. Okay. But we know that it was his vision. That's why we want him to take a step forward, and we will support him always whenever he will need it. Will it sustain once you will be earning the targets which you have set for yourself in 2019? Yeah, so Will it remain the same? yeah, Yes, of course. Yes, sir, of course. We are hoping for the Sir, best. should I tell you the reason? I started the page when both of them were not even. इनको पता भी नहीं था seriously बताऊँ कि मैंने page start करा है. मैंने page start करा. मैं car fan है. YouTube में interest था, but मैंने पहले सोचा कि पूरी knowledge ले अच्छे से. पहले एक page बनाता हूँ Facebook पे. तो तभी ने पता नहीं था. फिर जब धीरे-धीरे grow करने लगा, मेरे को इन लोगों से ही knowledge मिली. कौन किसी का SEO में interest है, videography में interest है, जिनमें मैं best नहीं हूँ. मेरा क्या interest है? बोलना और गाड़ियाँ. ठीक है, उनमें मेरा interest है. उसका कैमरा में he is the best in camera. When it comes to content, he is the best. And when it comes to dealing with the people, he is the best. And because of that, जो जितनी भी हमें चीजें चाहिए, कंटेंट, वीडियोग्राफी एंड द पर्सन, इन सब चीजों का एक मिक्सचर है. तो हम तीनों ने सोचा क्यों ना हम एक प्लेटफॉर्म पे उस चीज को आगे बढ़ाएं. बिकॉज एक बहुत बड़ा टारगेट है, तो इट्स बढ़िया रहेगा कि हम लोग भी उसको सपोर्ट करें. हमारा It's एक ही better. फील्ड में नहीं है, किसी वीडियोग्राफी, हमारा हर फील्ड में है, तो हमें और उसी हिसाब से हम अपने आप को करना है. Thank you. Thanks a lot. My name is Nikhil Gold, I'm the founder of Tecnia. पिकनिक के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिकनिक की शुरुआत मैंने क्यों की, क्या रीज़न था पिकनिक के पीछे. इसके पीछे मेरी खुद की सोच थी. अभी चाइल्डहुड मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था. बचपन से अकेला रहता था, तो खाने का मैनेजमेंट मुझे खुद ही करना पड़ता था. और एज अ बीइंग अ लेज़ी गाय और कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड फैमिली, तो मेरी हमेशा कोशिश रहती थी कि बाहर से खाना खाऊँ और पॉकेट फ्रेंडली रेस्टोरेंट से खाना खाऊँ या फिर स्ट्रीट फूड वेंडर से खाना खाऊँ. रिजल्टिंग
कई बार मुझको फूड पॉइजनिंग हुई, मैंने हेल्थ इश्यूज हुए। एक बार तो मुझे मेजर लीवर इन्फेक्शन भी हो गया था, तो मैं 3 महीने बेड रेस्ट पे था। तब मेरे पास इनफ टाइम था सोचने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे जैसे ना हजारों लाखों लोग हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, कॉर्पोरेट पीपल हैं जो एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करते हैं, या फिर कुछ पीजी हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होगी, वो भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि मेरे साथ जो हो गया सो हो गया, मैं बाकी लोगों के साथ ना होने दूं, आप लोगों के साथ ना होने दूं। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करूं कि ये जो बेसिक नीड है फाइंडिंग ऑफ क्वालिटी पॉकेट फ्रेंडली फूड, इसको सोल्व कर पाए। तो मैं जुड़ के अपनी टीम के साथ, मैंने आकाश से बात करी। आकाश मेरा को-फाउंडर है। आकाश का बैकग्राउंड अगर मैं बोलूँ तो ही इज वेरी गुड इन फूड, बेसिकली इसका फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छा है। आगे हम स्लाइड में बताएंगे कि इसका बैकग्राउंड कैसा है। मोनिका कॉलेज स्टूडेंट है। मोनिका से मैंने बात करी, मोनिका को बताया कि ऐसे मैं काम करना चाहता हूँ। शी इज कॉलेज स्टूडेंट, तो उसको पता चला कि हाँ एक्चुअली नीड है कॉलेज स्टूडेंट के पास, ये बेसिक लिमिटेड पॉकेट मनी होती है, उसमें हम नहीं कर पाते हैं मैनेज। तो बात करते हैं टेक्निक के बारे में। इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू फाइंड हाइजीनिक पॉकेट फ्रेंडली क्वालिटी फूड ऑप्शंस। प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। प्रॉब्लम क्या है मार्केट में एज ऑफ नाउ? देयर इज हार्ड टू फाइंड क्वालिटी पॉकेट फ्रेंडली फूड ऑप्शंस। इवन गूगल कांट हेल्प यू टू फाइंड क्वालिटी फूड ऑप्शंस। अगर बात करें तो आपके आसपास की नुक्कड़ चौराहे में मोमोज वाला है, कोई समोसे वाले से आप क्वालिटी एश्योरेंस नहीं ले पा रहे गूगल से एज ऑफ नाउ। देयर इज नो प्लेटफॉर्म हु इज ऑफरिंग डिलीवरी फ्रॉम स्ट्रीट फूड कार्ट वेंडर्स व्हिच इज अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, जो भी अभी कैटर्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ना तो उनके पास बैंक अकाउंट है, मतलब कुछ भी नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है। सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन बेटर मोनिका समझा पाएगी आपको। Solutions पर आते हैं। Picnic is a single place where food delivery and discovery works all together. Anyone can find restaurant and street foods outlets at a single place and can easily order food at a single click. People can find food outlets based on their ratings, reviews, cost and deals they are offering. Anyone can buy a food coupons deals without spending a single paisa. स्पेंडिंग a single पैसा मींस सिंगल पैसा, 1 रुपया भी आपको स्पेंड नहीं करना उस पे। जैसे हमारा प्लेटफॉर्म है, हमने अभी रिसेंटली अपनी ऐप लॉन्च की है। हमारी ऐप पे जाइए, विजिट कीजिए, आपको दिखेगा मिडिल ऑफ द सेक्शन बीच में, आप अपने एरिया को सिलेक्ट कीजिए, आपको एरिया में दिख जाएगा कौन कौन से वेंडर्स हमारे साथ टाई अप हैं और जो डील्स एंड डिस्काउंट दे रहे हैं। आपको जस्ट रेफर करना है पिकनिक को और गेट डील्स एंड डिस्काउंट फ्रॉम देयर, सिंपल। अब आते हैं मार्केट साइज पे। अकॉर्डिंग टू नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट साइज का वर्थ है 2013 में इसका वर्थ था 1,71,000 करोड़। इन 2016 इसका वर्थ था 2,07,000 करोड़ एंड इसका प्रोजेक्शन 2021 का है 2,91,000 करोड़। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की बात करते हैं, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है बैंक अकाउंट्स के साथ, जिनके 1 से 2 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं। इसका 2013 में वर्थ है 55,000 करोड़। 2016 में इसका वर्थ है 72,000 करोड़ एंड इसका प्रोजेक्शन इन 2021 का है 1,39,000 करोड़। अब रेवेन्यू मॉडल आपको आकाश समझाएंगे। Our revenue model is very simple. First of all, we are taking commissions on food delivery. Food delivery is our secondary product. After that, we are charging restaurants to promoting their content on our platform. Like if you have a restaurant or cart or if you are a food vendor, तो आप हमारी application पर premium content avail कर सकते हैं, which is very easy. And again, advertisement for restaurants, which comes with us, like parallel advertisement हम करेंगे restaurants के लिए. Charge food vendors to put in promotional deals and discounts to attract more footfall. इसके साथ एक financial projection मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, जो हमारी upcoming within this year हमारी projection है, to become number one pocket friendly finding food option. हमने sponsor listing तो कर लिया, उनको पैसे देंगे vendors से. But we were unable to provide the business. So I thought this is just because कि अभी हम क्या करते हैं कि आप जैसे वेंडर हैं, आपकी ये पर्टिकुलर शॉप इस एरिया में, राइट, इन दिस मार्केट,
हम आप ही के पास आते हैं, आप ही से पैसे लेते हैं, आप ही को प्रीमियम लिस्ट अपने ही प्लेटफॉर्म पे रखते हैं और आप ही की मार्केट में आपके और अपनी दोनों को प्रमोशन कर देते हैं। तो कैनोपीज, ब्रॉशर्स, ग्राउंड लेवल प्रमोशन। आई गेस आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो कि प्रीमियम लिस्टिंग क्या होता है। एक्स को सर्च करेगा तो वाई जरूर दिखेगा। So दो चीजें I have a suggestion for you guys. Yeah, sure. One is try to make it a viral advertising. WhatsApp से discount coupons and all those types से ताकि मैं अपने सोशल नेटवर्किंग करते हैं। ऑलरेडी सर अभी सोशल नेटवर्क पे हमारे पास 4000 से ज्यादा लाइक्स These activities like if you are my friend, I'll send you the links and all the stuff so that you can use. You can use because we don't have enough funds to market ourselves on the higher pitch. So as of now, we are doing it's वो सर हमें पता है, हम वेरी श्योर है कि इस मार्केट में अभी तक कोई टैप ही नहीं कर पाया। इसमें मेहनत तो है काफी, बट पैसा भी बहुत है। we are inspired from basically we अलग अलग मॉडल्स हैं दोनों के। मेरा इंस्पायर्ड विजय शेखर सर में, उनकी मैंने स्टोरी पढ़ी, स्ट्रगल किया उन्होंने, तो कुछ मेरी भी स्टोरी कुछ बोल सकते हैं सिमिलर है उस लेवल पे। मैंने भी स्ट्रगल देखा अपनी लाइफ में। मैं इसके साथ मैंने वोडाफोन ज्वाइन किया था, वोडाफोन के बाद मैं एयरटेल गया, और एयरटेल के बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन छोड़ दी थी बीच में, सीरियस ड्रॉप आउट में। तो मेरे को एज ए 12th लेवल पे नॉर्थ इंडिया का रीजनल मैंने बना दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा काम। मतलब काम किया है हमने मार्केट में, मतलब हम पढ़ाई नहीं कर रहे उसको हमने, और उसके बाद फिर मैंने उसको छोड़ दिया, अपने पैशन के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद मैंने बहुत सारे दिन ऐसे देखे कि मतलब खाना भी नहीं मिलता था। learned lot of things. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you so much. So good afternoon, one and all present here. Today, Irachit Arora, along with my teammates Hardik Singhal and Dinesh Luthar, are here to showcase our business plan. So here we start. Hey Ranjit, you seem a little exhausted. What happened to you, bro? Completely knackered right now, Hardik. I mean, I've wasted a lot of energy. You know, I was just getting off our presentation, so. Oh, is it so? Yes. What if I tell you that I can generate electricity through this complete waste of energy? Hardik, are you serious? You have gone nuts. You are saying that you generate electricity with the help of this waste energy? Exactly, bro. It is possible. How is it possible? I mean, you are saying that you generate electricity while I walk, while I dance, while I groove, or while I drive my car or a scooter. I mean, how is this possible? You know, I know that you are really concerned about the energy crisis, and you also know that the non-renewable resources are getting depleted. But you are saying that you generate electricity with the waste energy. That's it. Just listen to me very carefully and be all ears. That's it. Whenever you walk, whenever you drive cars on road, or whenever you do exercise, you tend to transfer energy to the ground, or basically you are providing a mechanical stress to the ground, and this mechanical stress can be directly converted into electrical energy. And to carve out the niche in the market, we have made a device that is exactly the same thing. SEED, stress to electrical energy device. This device is based on a basic principle of piezoelectricity. Piezoelectricity might be a technical term for you, but I would like to explain it in layman language. It is nothing but an ability of a certain material to convert the mechanical stress or the force they apply on the floor directly into electrical energy. And it was discovered back in 1880s by QE brothers. We will be installing a device on their dance floor, on pedestrian walkway, airports, runway, shopping malls. And this is even possible in the case of sound and noise, as they are nothing but only vibrations. Moreover, whenever there is noise pollution, heavy vibrations are created, and these vibrations helps to turn and generate electricity through the help of piezoelectric plates. And for your information, let me tell you that Delhi is among the top 5 noisiest cities in India. Mumbai back in the first position. Now I would like to quote some sources of noise pollution. Airports produce around 120 to 140 decibels. Nightclubs produce around 85 to 105 decibels. Red lights produce around 75 to 95 decibels. And rocket launches produce around 180 decibels. So you can very well imagine the amount of generated electricity with the help of this piezoelectric plates, and it's much higher than the permissible range. And yes, and the permissible range of noise pollution in India is 55 decibel during days and 45 decibel during night. And all these sources are much higher. So you can very well imagine the amount of energy is going to generate. So now my friend Dinesh will share you with the financial sources. So now I'm going to present the financial model of our company. But before that, let me tell you a bit about it. Financial model. It is a summary of company's performance based on various certain variables
and which would help the organization to forecast its future performance. So, preparing the financial model involves a few steps. The first one is we define various assumptions, such as the area required by the showroom and the manufacturing facility, which is 15,000 square feet and 30,000 square feet, respectively. Estimates of the business that turns out to be 125 per month. Revenue growth rate that we have assumed that I'll be telling you shortly. Get revenue and cost data. Then we'll be estimating the revenue and cost data, which would involve initial cost, deposits for the showroom and the manufacturing facility, rent amount. Moreover, the banks would provide us with the funds only when they will be assured that we will be able to return the funds. So for that, they would ask for the debt equity ratio. That is in our case is 2:1, which is absolutely perfect. Then we'll be modeling the future profits. We'll be subtracting the operating expenses from the revenues, which will give us the operating profit. And after that, we'll be subtracting the interest expenses and taxes from that, which will give us the net profit or the profit after tax. Then we'll be modeling the future cash flows and take decisions. Modeling future cash flows would involve eliminating all the expenses and liabilities by paying them off, and then we'll be taking the decision. The decision would depend on IRR, that is internal rate of return. Internal rate of return is the metric which is used to estimate the profitability of the potential investment. That is in our case is 65%, which is a good one. So this is the target market we are aiming for. First we will approach Airport Authority of India, then National Highway Authority of India now, and after that railway authorities, metro authorities and districts as well. Now what will be our marketing strategy? So first of all we'll be having seminars for the corporate level to attract the agencies. After that we'll be advertising on the newspapers and bulletin boards, and after that we'll be also giving a sales discount, that is we'll be providing a free LED on every purchase and going to give discount on bulk products. There must be, like we have talked a lot about energy, financial model and many more things, but there must be one question must be popping in your mind, that is how much energy is produced? Yes, if I talk about an area where around 300 to 400 car travels, then our device is able to generate around 500 volts. And if I talk about airport, on daily basis around 40,000 decibel of noise is produced, and our device in that which is able to generate around 200 to 300 volts, and that is enough to provide power to street light, and that is enough to provide power to home appliances. And in India, nobody has taken this step, and we will be launching our product or launching our device on Discord like basically over there. And if we talk about the small scales, it can help to generate and help to run the home appliances such as vending machines, street lights, LED bulbs, fans, etc. And if we implement this project on a large scale, it can even help to electrify dark villages in India. There are many dark villages in India which are not electrified. So what we will do, because of urban noise pollution, we'll be storing the energy from here and we'll be providing that energy to the non-electrified villages in India. So this will help to generate revenue as well as it will help to electrify the village as well. And what we do, we are also promoting the Agenda 2030 of United Nations Sustainable Development Goal. So this was our business idea and products. Thank you. नमस्कार, टेक्निया टीवी में आप सभी का स्वागत है। हम खड़े हैं टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में, जहां चल रही है बिजनेस प्लान कंपटीशन, जहां पर जज आए हुए हैं। सर आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम राकेश है, राकेश मेहता, एंड आई एम द ओनर एंड डायरेक्टर ऑफ एस्ट्रल एजुकेशन, एंड वी आर अ यूजीसी नेट कोचिंग इंस्टीट्यूट, एंड बाय टीचर्स एफर्ट्स एंड गॉड ग्रेस वी आर नंबर 1 इन इंडिया फॉर दैट। और आई एम अ विनर ऑफ एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो इसी वजह से शायद मुझे बुलाया गया ये बिजनेस प्लान कंपटीशन को जज करने के लिए, एंड इट्स एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू वेरी मच सर। सो सर एज अ जज आप का क्या क्राइटेरिया है किसी इस कंपटीशन को जज करने के लिए? जी, देखिए बहुत अच्छी टीम्स आ रही हैं, तो डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है जज करना। एंड मुझे जो क्राइटेरियंस अभी हम लोगों ने डिस्कस करे हैं जजेस ने आपस में, उसके बेस पे हम लोग इनोवेशन पे ध्यान दे रहे हैं कि कितना यूनिक आइडिया आ रहा है, उसकी फिजिबिलिटी क्या है मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंशियल एंड प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर पर्सपेक्ट्स कैसे है, डाउन द लाइन 5 ईयर्स वो आइडिया कितना सर्वाइव कर पाएगा, एंड मोर ओवर रिसर्च टीम ने
कितना किया हुआ है वो आइडिया प्रेजेंट करने से पहले, और क्या वो कोई कॉपीड आइडिया तो नहीं है कि ऑलरेडी कोई आइडिया चल रहा है और हमने सिर्फ उसका नाम चेंज करा और प्रेजेंट कर दिया। तो छोटे छोटे बेसिक क्राइटेरियंस एंड बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड और अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं। तो आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि यहाँ से बहुत सारे आगे अंबानीज टाटास निकलने वाले हैं, तो आई विश देम ऑल द बेस्ट। सर बिजनेस प्लान कंपटीशन में क्या आपको कोई एक ऐसा डिफरेंट आइडिया मिला है जो आप कहें कि हाँ ये अच्छा है, काफ़ी आगे कैरी फॉरवर्ड होने वाला है? अभी हम लोगों ने रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं करे हैं तो मैं बताऊंगा नहीं कि यूनिक आइडिया कौन सा है, बट हाँ अभी एक आइडिया हमें मिल चुका है जिसके साथ शायद हम लोग भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया। कैमरामैन नरेंद्र बिस्ट के साथ अरबाज खान, टेक्निया टीवी।